नमस्कार दोस्तों, जय हनुमान जय होम्योपैथी। आपका होम्योपैथी वाला में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि लॉजिक ऑफ होम्योपैथी के बारे में। तो व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिक? आपको लॉजिक के बारे में क्या कहना है? तो इसके मेनली टू मीन होते हैं, द आर्ट ऑफ रीजनिंग एंड द आर्ट ऑफ द करेक्ट थिंकिंग। तो आपने यहाँ पे देखा कि सम डिक्शनरी मीनिंग ऑफ लॉजिक के अंदर क्या दिया गया है। तो साइंस ऑफ रीजनिंग दिया गया है, रीजनिंग कंडक्ट एट एसेंडेंट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल ऑफ द वैलिडिटी, द एबिलिटी ऑफ द। आप लॉजिक के टू टाइप है, आपको पता ही होगा कि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक। तो इंडक्टिव लॉजिक की बात करें तो टेक्निकली प्योर ऑफ द फॉर्मल लॉजिक एंड इंडक्टिव लॉजिक। फॉर्मल लॉजिक की बात करें तो टेक्स नो अकाउंट ऑफ द मैटर ऑफ द रीजनिंग ऑफ द थिंग रीजन अबाउट। फॉर्मल लॉजिक डील्स solely with the form or skeleton of the reasoning. In purpose is to provide the general and symbolic form which reasoning must assume in order to ensure that the end of the proposition may be consist with. इंडक्टिव लॉजिक की यहाँ पे कुछ बात की गई है। तो इंडक्टिव लॉजिक कंसर्न इट सेल्फ विथ द फैक्ट विथ रियलिटी इज प्राइमरी पर्पज इट इज द डिस्कवरी एंड यूज ऑफ ट्रूथ। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द इन द हिस्ट्री ऑफ द मेडिकल साइंस, Dr. Hahnemann was the person who utilized the logic for the conclusion with the influence by the logic of Aristotle and Lord Bacon. It was the continuous evolution of the Dr. Hahnemann sir. Perception of intuition in the induction and deduction was there. Discovery of the homeopathic chronic disease. एरिस्टल की बात की गई कि 384 और 382 जो एरिस्टल थे उसने वो सन ने जो लॉजिक है उसके बारे में क्या बताया था। तो फादर ऑफ द बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक, इस मेथड ऑफ द लॉजिक वाज कॉल्ड द syllogism or deductive reasoning has a true perception for it. Syllogism is open to some criticism. The defect in the system itself, our estimation of the psychology, because it is not applicable in all. Lord Bacon 1561 and 1626। तो यहाँ पे लॉर्ड बेकन के बारे में भी कुछ बात की गई है। तो आपको जो आगे है कि इंडक्टिव लीप, लॉर्ड बेकन इंसिस्ट दैट एक्सपीरियंस इज द सोर्स ऑफ द नॉलेज, सो वीकनेस ऑफ द इंडक्टिव वॉज टोल्ड बाय हिम हिज इंडक्टिव लीप he divide mere collection of the word or give the conclusion. The real and external factors should come up with proper proposition. Intelligence jumping induction is based on the assumption, uniformity of the nature, unity of the nature and law of causation. Or inductive will give new knowledge, but deduction will not give new knowledge. So to find out something true, the person should get rid of his own prejudicing. Before one process to make a deduction, classification and generalization, one must be sure of reliable fact. The induction must be complete without break from the premise. Step of the inductive logic. The inductive method in logic is the scientific method that process by the induction is required exact observation, correct interpretation of the observed, rational explanation of the facts by the referring them to their real case or law, and scientific construction, putting the facts in such coordination that the system science become the basic and so it relieve and human suffering. Right arrangement of data gives right hypothesis. Hypothesis is the basis of the which we process for. Verifications of the hypothesis merely detection, मतलब कि वेरिफिकेशन ऑफ द हाइपोथेसिस वो एक डिटेक्शन के अंदर आता है। जॉन स्टुअर्ट मिल, तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या कहा है लॉजिक के बारे में? तो जो सर थे जॉन स्टुअर्ट, ही डिफाइन रेडिकल एप्लीकेशन इन द लॉजिक एंड मैथमेटिक्स, सजेशन इन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक एंड मैथमेटिक्स आर द जनरलाइजेशन फ्रॉम द एक्सपीरियंस रेदर देन नॉट इन द सोरेसी। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।